Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today we are going to discuss a new chapter, that is mensuration. To this chapter, I will divide it into two heads. One, 2D figures, other will be 3D. In 2D figure, we will talk about circle, triangle, square, rectangle. These type of figure we will talk about. And in 3D also I will divide it into two parts, P1, P2. Those figure whose top and base are same, we will talk about under this head. And those figure whose top and base are different, we will talk in this. Example can be your cylinder whose top or base are same. Other can be cube, cuboid, etc. These type of figure. Those figure whose top and base are not same can be a cone, can be fulcrum. These type of figure we will talk in this. So let's begin our chapter with 2D images. There can be rectangle, circle, square, triangle, quadrilaterals, and pentagon. These are 3D images. Now, the first image is triangle. The basic formula to find the area of a triangle, that can be 1 upon 2 base into corresponding height. Mind my words, I said corresponding height. What does it mean? कि अगर कोई ट्रायंगल है और अगर तुम्हें बेस पता है और हाइट किसी तीसरे बेस के करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स इस बेस के अकॉर्डिंग पता है. A triangle में ए बी सी. एंड नाउ इफ आई एम टेलिंग यू टू फाइंड द एरिया, और तुमने क्या किया, सर मैं आपको ट्रायंगल निकाल के बताता हूँ, एरिया निकाल के बताता हूँ. कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट कर दोगे. देन दिस विल बी नॉट the right answer. I said corresponding height. Whatever base you are taking, for example, you are taking this base, then the corresponding height will be multiplied with this, not any height. So remember, if you want to find the area, that means if you are taking this triangle, you are taking this base B, then you need to take its corresponding height, this h. Then you will find the area of a triangle. What is the takeaway from this topic? That is, area is equal to 1/2 base into corresponding height. Remember this. Now, if you understand this, then find the area of this. And now, what is the rule? If you can see this question, pause the video. Then try to solve by your own, and then see that how I have solved this question. Now, again, so formula is 1/2 base into corresponding height. And here you can find this is right angle triangle. That means this is 90 degrees. So this can be base, then 1/2 into 3. This can be height into 4. 6 centimeters square is the answer. And now, if you can find this, can you tell me if I can draw this line? Okay, I can use this also. Now suppose this is P. Can you find BP here? Again, pause the video, try to solve. Same information, same piece of information. Now this time I'm asking, what is BP? Tell me the length of BP. Again, sir, I can find the area of a triangle by writing 1/2 base into height, and again that is equal to 1/2. This time base will be 5, but sir, BP is the height, corresponding height, as you told. So this is similar, and this can come here. That means 3 into 4 upon 5 is equal to BP.
Now sir, 12 upon 5 is equal to BP. Now here you can do 2.4 centimeter is the length of BP. Hope you understand this. If you understand this, let's move. And if you have noticed, this is right angle triangle. This is 3, 4, 5. That means whenever this Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. This is known as triplet numbers. So try to remember some triplets that will help you to solve your questions very quickly. For example, during examination, if this is given, that is base is 3 and hypotenuse is 5, then you no need to use this formula. You can directly write here, so this will be 4 because this forms a triplet. Not only this, if you multiply all this number with the same number, that means multiplying suppose by 2, 6, 8, 10, then also this number will form same triplet. Example, 10 square is 100, 6 square is 36 and 8 square is 64. Again triplet formed. That means by remembering one triplet you can solve many questions. That is for only कि हाँ क्वेश्चन तुम्हारे जल्दी जल्दी सॉल्व हो लेंगे. Example, in early childhood we used to remember tables only because that will help in calculation. These are some triplets. Not if not all, so remember the first line. Now again, types of triangle. The triangle can be equilateral triangle. That means all sides will be equal. Then we will call this type of triangle equilateral triangle. Suppose this is A, then all sides will be A. Isosceles triangle. That means two sides will be equal. Suppose this is A, this will be also A, and this will be B. In a scalar triangle, all three sides will be different. Suppose this is A, this is B, this is C. And to find the perimeter, suppose in this figure, this side is L, an equilateral triangle. Sir, अभी हमने सीखा कि अगर equilateral triangle है सारे side equal होंगे, this will be L, and perimeter is the sum of all sides. This can be L plus L plus L. This means 3L will be the answer. In this two side isosceles triangle, two sides will be same, one side will be different. That means L plus B. This will be 2L plus B. In this figure, so all sides are different. The perimeter will be sum of all sides. Sides are A plus B plus C. Now, first figure was equilateral triangle. Suppose if I will draw one line, one perpendicular line, that means this will be 90. And if these two sides are equal, that means these two will be equal by using triangle property. If suppose this complete is A, this will be A upon 2, this will be A upon 2. Why I am doing so? To find the area of a triangle. And remember, if this complete triangle is A, B, C, and this is middle part is D, in this triangle, that means in triangle ABD, you can write hypotenuse square is equal to perpendicular square base square. Here hypotenuse is A, that means A square is equal to, this is P square, this is P square. We can write this capital H as a height of this triangle, that means H square, plus this is B square, that means base is here A upon 2 whole square. Then again A square plus, suppose this is equal to H square, this is height here, and again A square upon 4. If you can find the height, then you can write height square is equal to, you must have sent this that side, A square minus A square upon 4. This will give
3a square upon 4. And now here h square in the square, sending this square that side, that means h is equal to root 3a upon 2. Here you find the height. And now, what is the area of triangle? A is equal to 1 upon 2 base into height, base into corresponding height. Now, 1 upon 2 base is given, that means A. Now we are taking this complete triangle ABC to find the area. The base is A and height, you find this. H can be, sorry, right here capital H, or otherwise you will be confused. Root 3a upon 2, and now the area is root 3a square upon 4. Now we have two things during examination. If examiner asks find the height of equilateral triangle, if side is given, directly you can write, suppose this a is 3 and I will ask you tell me the height of this triangle. You can directly use this formula, root 3 into 3 upon 2. That means sir, height of this triangle is 3 root 3 upon 2. Directly you can find. I told you the derivation also, that how I directly jump to this formula. To know the derivation also and know the result also. Similarly, if you know the side, you can directly find the area also. How? You can directly write root 3, side is 3 square 9 upon 4. That means 9 root 3 upon 4 is the area of this triangle. Hope you understand this. And now, extending to our concept, we learn the area of a triangle, height of a triangle. Suppose a circle is drawn and touching all the vertex of this triangle, that in circumcircle. Then if I will ask you during examination, what is, suppose this point is O, what is the radius? And radius can be capital R if circumcircle. If I will ask you the inner circle radius, that means there will be a small r. Using a concept that if you draw medians from all vertex to the opposite side, this will divide the height into 2:1 ratio. You must be aware of. Then OC upon OC dash is 2:1. We must be aware of. In the earlier classes, in 6th, 7th maths, you learned this. If you know that this line, this height of this equilateral triangle, this is equilateral triangle. Remember, I'm talking about equilateral triangle. So then, if you aware that height is written this is height, and this capital R is 2 upon 3. That means this is 2, this is 1. That means entire will be 3. So 2 upon 3 of what? Of this height. Then I can write 2 upon 3 of is into, and h we find in the previous slide, that is root 3 a upon 2. We can cut this and we can directly write root 3 upon 3 a is what? Is capital R. तो हम इससे कैपिटल R निकाल सकते हैं. That means अगर एग्जाम में पूछा गया है कि साइड 3 है, तो फिर सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो नो नीड टू पैनिक. Simply you can write root 3 upon 3, and what is the side? Suppose side is given 3 in the previous slide we said. So then capital R will be root 3 only. Okay, you understand capital R. If you want to find a small r, then what we can do? Again, as I told you, this point divides this height into 2:1. Then we can write 1 upon 3 of height. That means 1 upon 3 into what was the height? Root 3 upon 2 into a. Remember, then you can directly write root 3 upon 6a. By this, you can find smaller also. Again, if side of equilateral triangle given, that is 3,
then you can directly find the radius. That means root 3 upon 6 into 3. That means small r is root 3 upon 2. Directly you can write. If you understand this, let's move to our next concept. Now, suppose second type, that is isosceles triangle. What we can do in this? Again, we will draw height. These two sides are same. This third side will be different. Suppose this is A, this is A, this is B. Again, these two sides are same. Then we can write this B upon 2, B upon 2. This is the length from here to here. And again, Pythagoras theorem, you can find this. If I'm writing this A, B, C, and this is O, then you can write this AO. To find again hypotenuse square, that means here A square, this is hypotenuse, A square is equal to base square, that means B square upon 4. Again, this AO square, which is the height of this triangle. Again, you can write this A square is equal to B square upon 4, and directly I can write here H square, that represents height here. I will shift this and write A square minus B square upon 4. Then this is H square. If I will take LCM, then I can write this like this: 4A square minus B square upon 4. If I move this square from this side, and there will be root, and 1 upon 2 will be outside of this root, and I can write 4A square minus B square. That means I find the height of the triangle. This can be height of the triangle. Again, now you can find the area. 1 upon 2 base into corresponding height, remember. So now 1 upon 2 base is B here, and height is, you find it, you can take it from here. This is capital S. Now you can find height. 1 upon 4, this is B, 4A square minus B square. This is the area. Now we find the height. Sorry, this is area, B upon 4, 4A square minus B square, and this was the height. Now you can directly use, if you are aware, this side is something, for example 2, this is side base is 8, B value is 8, you can directly write here and you can find the height also, you can find the area also. Now you can find the perimeter also. Perimeter is sum of all length. You can write A plus then B, that means A and B, that is 2A plus B will be the perimeter. Hope you guys are connecting this. Third type of triangle is scalene triangle. If you want to find the area of a scalene triangle, you can use Heron's formula. This is Heron's formula, that A is equal to root S minus A, then S minus B, then S minus C. And here S is semi-perimeter. Whatever the perimeter we will find, divided by 2, we will write it as S, that means semi-perimeter. And how we can derive this formula also? Suppose I draw a perpendicular line, the base B, naming this triangle ABC and this side O. लेकिन इस बार मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो A और C तो इक्वल है नहीं, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरा B, ये BO x है, तो OC B माइनस x हो जाएगा। और इस पार्ट ऑफ ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। डेट मीन्स हाइपोटेन्यूस A है यहाँ पे, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर लिख दूँ या फिर हाइट लिख दूँ h का स्क्वायर, तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h हो जाएगा, h स्क्वायर। सिमिलरली अदर पार्ट ऑफ ट्रायंगल में अगर मैं सेम फॉर्मूला
अप्लाई कर रहा हूँ, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइट दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ मैंने एच स्क्वायर, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई, दोनों सेम है एच स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, डैट मीन्स सी माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ए बी बी एक्स है तो बी एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इस माइनस को ब्रैकेट जब अंदर ले जाएंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस बी स्क्वायर अंदर था तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर था तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली पता होगा आपको, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो अगर ए स्क्वायर इस साइड है, माइनस सी स्क्वायर साइड आएगा, प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो फिर हम x0 निकाल सकते हैं। अगर हमने x निकाल दिया तो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर सपोज यहाँ पे मैं इस साइड लिख रहा हूँ कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्क्वायर और माइनस एक्स की जगह पे हम लिख रहे हैं, ये वैल्यू लिख रहे हैं, तो फिर a माइनस 2 स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ भी होगा तो मैं सीधे से 4b स्क्वायर लिख दे रहा हूँ तो टाइम स्पेस टाइम के लिए। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम अगर ले यहाँ पे तो क्या यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे अभी भी ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्क्वायर है यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और डिनोमिनेटर में 4b स्क्वायर है। इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ यहाँ पे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं 2ab का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तो ये स्क्वायर है ही, यहाँ कुछ चेंज किया नहीं हमने, अभी भी इसे डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है, और नीचे 4b स्क्वायर है। तो कुछ ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि हमने जो बहुत छोटे क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट और एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट लिख सकते थे, तो इसको बीच में ब्रेक करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारे लिए 2ab माइनस, तो सारे चाइंस बार चेंज हो जाएंगे, ये हो गया सेकेंड ब्रैकेट, और डिनोमिनेटर में अभी भी सेम है 4b स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2ab, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे सी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट अगर मैं बड़ा सा बना दूँ, और सेकेंड ब्रैकेट यहाँ सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर को रख के माइनस यहाँ पे होल्ड करते हैं, अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने माइनस अगर कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये यहाँ पे ये जो चीज़ थी, ये चीज़ यहाँ पे जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई, तो यहाँ पे 2ab हो गया, जिसको मैंने इस तरह ब्रेक किया है, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या आ गया 4b स्क्वायर। यहाँ स्पेस नहीं है तो पीछे लिख रहे हैं, दोबारा देखो, दोबारा से यहाँ पे बन रहा है सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखाया था साइड में, क्या लिखाया था कि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई फर्स्ट ब्रैकेट और एक्स माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट लिख सकते हैं, तो दोबारा से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्या यूज़ कर रहे हैं कि हम एच स्क्वायर को यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं, तो फिर सेकंड में a प्लस बी माइनस सी सेकंड ब्रैकेट लिख सकते हैं। यहाँ से हम ये देख रहे हैं, ये सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स c प्लस क्या है यहाँ ब्रैकेट में a माइनस बी है,
तो c प्लस a माइनस बी लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, और सिमिलरली c माइनस a प्लस b ब्रैकेट लिख सकते हैं। और इन सब के डिनोमिनेटर में क्या है, 1/4b² अभी भी है। अभी मैं पीछे पढ़ा था हमने कि पैरामीटर ऑफ स्क्लेरन ट्रायंगल निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, और सेमी पैरामीटर निकालने के लिए a प्लस बी अपॉन 2, डेट मीन्स 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ऐसे। तो क्या मैं a प्लस बी की जगह 2s लिखूँ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो यहाँ पे 2s लिख दिया। और सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस सी अगर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगा? अभी भी सेम चीज़ है। तो मैंने अगर इसे लिख दिया तो इसके जगह पे मैं लिख रहा हूँ 2s, और यहाँ पे रहेगा ही रहेगा 2c। तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूँ, 2s माइनस 2c यहाँ लिख दिया मैंने। और सिमिलरली अगर यहाँ सॉल्व करोगे तो 2s माइनस 2b, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 2s माइनस 2a, ये चीज़ मैंने सॉल्व कर ली। और डिनोमिनेटर में क्या है, 4। अगर मैं इसके 2 कॉमन ले लूँ, दैट मीन्स 2 यहाँ इससे ले लिया, 2 इस ब्रैकेट से, 2 इस ब्रैकेट से, और 2 इस ब्रैकेट से, तो s तो है ही, और इंटू 1/4b² भी है, और ये तो बचा हुआ पार्ट क्या हो गया यहाँ पे, दैट मीन्स कि s माइनस a, अरेंज कर लेते हैं इसको, s माइनस b और s माइनस c यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 4 मैंने यहाँ से काट दिया, और ये 4 बचा हुआ है, दैट मीन्स 4s अपॉन b², और ये ब्रैकेट में बच गया s माइनस a, और ये s माइनस b, और ये s माइनस c यहाँ पे बच गया। ये h² है। h निकालने के लिए मैंने रूट लगाया तो 2/b बाहर आ जाएगा, और पूरे पे रूट लग गया, दैट मीन्स s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमने बना h निकल गया। अभी हमने सीखा है पीछे कि हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। एरिया निकाल सकते हैं, एरिया 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट से। करस्पॉन्डिंग हाइट्स निकाल सकते हैं, तो 1/2 बेस b था, और h अभी हमने निकाल लिया यहाँ पे, डेट मीन्स 2/b अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b अंडर रूट में है, और s माइनस c। तो ये b से ये b कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा क्या, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, और यहाँ पे s माइनस c। और ये क्या हो गया, यही ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि अब सर डायरेक्टली से लर्न कर लेते हैं। लर्न हम कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम इसे ड्राइव कर रहे थे हमने कई सारे एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं, और अगर इन एप्लीकेशंस के बेस क्वेश्चन अगर आता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर ये समझ में आती है तो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस ट्रायंगल का, जिसमें हम थीटा दैट मीन्स एंगल का यूज़ करके भी एरिया निकाल सकते हैं। कि सपोज अगर ये दो साइड गिवन है और ये आपको एंगल पता है ये वाला, तो सिंपली एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC, और इसके बीच में जो साइन का यूज़ करके साइन थीटा से हम एरिया निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर ये दो साइड ले रहे हो तो ये इस एंगल का यूज़ करोगे, अगर ये दो साइड ले रहे हो AC ले रहे हो तो ये थीटा यूज़ करोगे, जिन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा। अगर ये बात समझ में आती है तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। तो मैं सपोज कि मैं से क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे, और पीछे कोई क्वेश्चन था नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसे देता हूँ, इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में करेंगे 2, ये 3 हो गया, इसका आंसर करेंगे। पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए। क्वेश्चन 2 ये है, पॉज वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, pause the video, solve this question and comment the answer. This was the 4th and this was the 5th one. That's all. We will meet in the next class. Thank you.